Hi students, welcome to our first video Information Technology class 7. I am Ram sir. Dear students, in this video we learn information about all computer. Okay, first topic is computer generation. Dear students, in this topic we learn electronic revolution, computer generation, feature of each generation, and what IT has done to our society. These are the four main point. Okay, first point is a computer generation. What is a computer generation? The students, this is money concept. Okay, computer are well established in the modern and daily lives of vast majority of people in many nations. Digital or electronic computer had their birth less than 75 years ago. The students, in our daily life we are use a computer. These are the digital computer, it is modern computer. But this digital computer had birth less than 75 years ago. Means इसका जो उत्पत्ति है वो पुराना है, यानी कि 75 ईयर एगो से उसे निर्मित किया जा रहा है. Okay, the development of digital computer is often divided into stage और generation. जो डेवलपमेंट पीरियड है उसका जो समय है उससे डिवाइडेड इनटू अ स्टेज और जनरेशन, इसे जनरेशन कहा जाता है. कंप्यूटर दैट आर मेड यूजिंग अ पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी आर सेड टू बी बिलोंग दैट जनरेशन. जिस समय वो कंप्यूटर बना गया है उस समय के लिए वो कहा गया जनरेशन. Each generation resulted in increasingly smaller, cheaper, more powerful, more efficient and more reliable machine. In every generation, computer has a more reliable, more powerful and more efficient and more reliable machine. Okay, so each generation day by day will be develop modern and powerful computer. Okay, dear students, we start our first page, page number 5. This is our okay. In this page there are many information. Okay, but we get information about electronic revolution. Okay, many physics, mathematician and engineer have contributed to development of electronic technology used to build electronic components and circuit system design and the program language. Electronic technology developed after the invention of vacuum tube, diode and triode. Dear students, electronic technology developed after the invention of vacuum tube. मीन्स इलेक्ट्रॉनिक जो टेक्नोलॉजी है वो हम देख रहे हैं वो सबसे पहला वैक्यूम ट्यूब के बाद उसका निर्मित किया गया है. डायोड एंड ट्रायोड जो इलेक्ट्रॉनिक का कंसेप्ट है, सर जॉन एम्बर्स फ्लेमिंग अ ब्रिटिश फिजिस्ट एंड इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर इन्वेंटेड द डायोड इन 19. जो ब्रिटिश का साइंटिस्ट है, फिजिस्ट मैन और इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर भी है, उन्होंने क्या किया है 19 में डायोड की निर्मित की है. ली डी फॉरेस्ट एन अमेरिकन इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर इन्वेंटेड द ट्रायोड इन 1907. दिस कुड बी यूज्ड एज इलेक्ट्रॉनिक स्विचेस. दिस आर द इलेक्ट्रॉनिक स्विचेस, डायोड एंड ट्रायोड. ओके, in 1937 Claude Shannon, a US mathematician, first designed digital circuit using such switches. जो 1937 में यानी कि 1937 क्लाउड शैमन अ यूएस मैथमेटिकन, उन्होंने फर्स्ट डिज़ाइन किया कौन सा डिजिटल सर्किट यूजिंग द सच स्विचेस, म्हणजे डायोड और ट्रायोड के मदद से जो पहला डिजिटल सर्किट जो किया है वो है 1937 में किया है. वो किसने किया है? क्लाउड शैमन. दिस बिकम द बेसिस फॉर फर्स्ट डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर. These are the base or first or digital computer. He also coined the term bit for a unit of information. In this period also bit means binary. Okay, then this earliest computer were built using a vacuum tube. उसके बाद ये जो सबके होने के बाद, जो डायोड और ट्रायोड होने के बाद और डिजिटल सर्किट होने के बाद जो पहला कंप्यूटर बना गया है वो है वैक्यूम ट्यूब. वैक्यूम ट्यूब आपको सबको पता है, वैक्यूम ट्यूब के मदद से पहला जो इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर बना गया है. वैक्यूम ट्यूब कंज्यूम लॉट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर एंड गॉट वेरी हॉट मच लाइक अ टंगस्टन
filament light bulb. Thus, computer had to build a big, taking up entire hall-size room and had to be cooled by hug air conditioner. Yet the computer could only be run for a few hours at a time before one of the vacuum tube broke and had to be replaced. In this period, डिस्टोन जो पहला कंप्यूटर बना गया था वो वैक्यूम ट्यूब की मदद से बनाया गया था, लेकिन वैक्यूम ट्यूब जो थी वो बहुत सारा लाइट कंज्यूम करता था, वो बहुत सारा रूम यानी कि बहुत बड़ा बनाना था, इसलिए वो बहुत महंगा था और खर्च वो भी था, इसलिए जो उसका वैक्यूम ट्यूब का लाइफ बहुत ही कम, इसलिए वो रिप्लेस करने पड़ता था। लेकिन जो बाद में है, the concept of stored program computer involved two essential components, memory and a control unit. The memory stored the program instruction along with the numerical data. The computer unit held the result of calculation in memory and used them in subsequent operation according to the program. From 1937 to 1945, many mathematicians like Gödel, Alan Turing, John von Neumann, and engineer Conrad Juice, G. Press Scott, John Macaulay developed the concept. This give birth the central processing unit, that is CPU, a essential component of modern computer. These are the many scientists and many engineers to give the birth for central processing unit. It's the essential component for all modern computer. Okay, these are the main development period of computer. Okay, then the biggest breakthrough in electronic come with the invention of transistor in 1947. The student in 1907 main concept, that is a record break innovation done, that is a transistor. US physics John Burden, Walton Button, and William Shockley. A transistor is a smaller electronic device made of silicon और जर्मनियम. जो ट्रांजिस्टर है वो स्मॉल डिवाइस है, वो सिलिकॉन और जर्मनियम से बना गया था. इट कैन परफॉर्म द सेम फंक्शन एज वैक्यूम ट्यूब. जो ट्रांजिस्टर है वो वैक्यूम ट्यूब की तरह ही काम करता था, बट मच मोर इफिशिएंट, फास्ट एंड रिलायबल. लेकिन जो वैक्यूम ट्यूब से अलग है, यानी कि वो मोर इफिशिएंट है, मोर एनर्जेबल है और फास्टर भी है. ओके, दिस स्मॉल एनर्जी इफिशिएंट डिवाइस अलाउ द सर्किट एंड computer to be compacted. Then physics found brilliant way of making transistors smaller and smaller and to connect several of them together into a single miniature processing board called integrated circuit. Then many physicians and engineers tried to make smaller and smaller device. Then they invented the IC, that is integrated circuit. These are the also main development of computer, that is a modern computer. उसके बाद जो है वो microprocessor. Further mention of come about with the invention of microprocessor in 1971 by Martin Hoff, an electronic engineer with Intel. He sequenced different integrated circuit which were designed for different calculator into a single chip and created one general purpose device, the microprocessor or the CPU on a chip. It marked a turning point in the Intel history, and that this first microprocessor, Intel 4004, was a 4-bit microprocessor. It contained 2300 transistors. Intel latest processor contained 291 million transistors. These are the some smart and shortest information about electronic revolution. Okay, these are the we learn it step by step all generation of computer, but these are the main concept of electronic revolution, how the electronic revolution was done. Okay, dear students, these are the main point of electronic revolution. Okay, now in next video we get information about generation of computer. Okay, dear students, you can revise this video. Thank you.